Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Jupiter would say, please do ask. Good afternoon, Peter. Good morning, Usman. Good morning, Varun. We'll start the analysis in 2 minutes. जब तक जो भी doubts है, please do ask. Good morning, Zaidji. Good morning, Shrikant. Let's start with the analysis, Sabari. देर विश्वास को बुला देगा. Is to be even long at 93.9.
Okay. Good morning, Nitesh. Yes. What are the major things that needs to be taken under the consideration in plotting of today's scenarios? कल के दिन एग्जैक्टली जो जहाँ पे हमें चाहिए था एलजी पॉइंट ऑफ एक्शन, उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में डेवलप हुआ था मूवमेंट, राइट? सो फॉर टुडे 1 hour, what is market indicating at the current stage? हाई वॉल्यूम, न्यूज स्कैंडल होने के बाद इंटैक्ट के साथ मूवमेंट नीचे के लिए डेवलप हुई थी, राइट? सो पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दैट मूवमेंट मार्केट आज के दिन में एशियन सेशन में एक डेवलपमेंट लॉन्ग के लिए दिखाया. Will you be interested in this long? Yes, definitely, but not at the current point with a redevelopment structure. यहाँ पे और एक structure develop होने दो. 1 मिनट में 1 hour का कैंडल क्लोज होगा, उसके साथ एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ एक्शन देख सकते हैं. रीजन ऑफ लुकिंग इनटू दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज बिकॉज फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ 1 hour वॉल्यूम, सेकेंड कंफर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इंटैक्ट से रिजेक्शन ले रही है, right? So if you are noticing the intact rejection perspective and follow through में drop दिखा रहा है आज के दिन पे, right? So ये drop क्या sustain होगा? For that we need to have a right allocation movement which is stabilized in the direction. Stability in the movement के लिए हमें क्या चाहिए majorly? What do we notice? Selling pressure, right? Selling pressure के साथ what are the one major things that you have to be looking at? You have to be identifying the next allocating structural point. Where is the next allocating structural point? अगर एशियन सेशन में ये रेड में ही रहेगा, देन लंदन सेशन में हल्का सा ऊपर जाके रिट्रेस होके इंटैक्ट लेवल 4212 से फिर से डायरेक्शन चेंज हो सकती है. ओके, बिकॉज सेलिंग प्रेशर, ऑलवेज रिमेंबर जब जब सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ है मार्केट क्या किया है, right? So at the current stage, we could look for one retracement point of action post completion of all the intact levels in 15 minutes and 1 hour, right? So as of now, Asian session has indicated a movement towards the long, but only till 4212, which is this point of action, which will be taken under the consideration. Right, LG point है, LG point of action से redevelopmental structure. Once the structure is formed, directional movement which will be taken under the play. अगर वो बिना हंड करे जाएगा तो आईडी ट्रेड ऑफ एक्शन प्लान्स में बने रहना, स्विंग होल्डिंग में मत जाना. गुड मॉर्निंग सुधर. ठीक है, so small steps, small action plans with small executions is what you have to keep in mind. बिकॉज अगर 1 hour पे अगर नोटिस करोगे, 1 hour का मूवमेंट में भी कैंडल एल जी क्रिएट किया है, right? Which is that movement. If you notice in 1 hour, this candle doesn't have a wick. So without creating a wick for this movement, I'll not be looking for a short holding trade. आईडी में ट्रेड करते रहो, प्रॉब्लम नहीं है, बट वो विक क्रिएट होना बहुत जरूरी है. अगर वो विक क्रिएट होता है, I'll be happily into the direction. अगर वो विक क्रिएट नहीं होती है, then I'll be looking for an execution perspectives of incomprehend moves. मतलब आईडी के प्लान ऑफ एक्शंस में बना रहूंगा मैं. 3 विंग के साथ लॉन्ग पे हो गए, हाँ. 4191.192 एंट्री.
उसके बाद ही तो एनालिसिस आई है. So let the market cover the movement, then the next plan of actions will be taken under the considerations, not prior to that. Any doubts, guys? YouTube members, please do ask. अभी तो नया कैंडल शुरू हुआ है, थम जाओ थोड़ा. 1 घंटे का नया कैंडल है. नहीं नहीं यार, 50 पिप से चल रहा है. 55. हाँ, तो अगर 91 4198 ब्रेक होके सस्टेन होता है, तब MTSL पे काम करूंगा, वरना ब्रेक इवन. सेटअप तो फॉर्म हुआ है, नो डाउट. Hope everyone is able to analyze the structures of supply and demand. जितने भी लोग 3 months के ऊपर से देख रहे हैं, उन लोगों को पूछ रहे. No change in plan as of now. BTC सेम प्लान में ही रहना. अगर चाहिए तो न्यू डेवलपमेंट प्लान पे आ जाओ, उतना है. डायरेक्शन सेम, allotment different. How will the allotment change in perspectives? First come first curve, right? The deployed action plan. Deployed action plan के साथ redevelopmental structure. Redevelopmental structure के साथ placement. Placement allocation 1. Revamp. Break and continue. 200% rejection. Demand allocation point 1. High weak range. Break and continue. 200%. First come first serve allocation, because market sustain नहीं हुआ था. Allotment in the play. M1 formation.
150% rejection. 3 wing setup formation. First come, first serve. Placement, high wick range, 100% rejection. With 100% rejection, new plotting will be taken under the play. New plotting candle is indecision candle, which will be taken into the consideration of new movement. Plotting 1. Break and continue. 200%. Right, with 200% of allocation, what do we notice? Demand structure plan. First come, first serve allocation. Point of action at the rejection, high wick range, 200% rejection. Okay. Good morning, Tosef. Nifty, same moment, redevelopment plan पे, aggregation 1, high wick range, break and continue, 200% rejection, 200% rejection के साथ, change of character, conversion, supply converted into demand, high wick range, break and continue, 200%, supply allotment plan 1, developmental structure 100, movement plan action, rejection, sustainable drawdown, sustained, same sustainable movement with the full action plan 1, drawback, break and continue 200%. Anyone has any doubts? Please do let me know. So this is the current allocation of Nifty. This is the current allocation of BTC. This is the current allocation of gold. All three major charts is taken under the consideration and the play.
खुशनुमार। बीटीसी का थोड़ा चेंज कर लो ना, मैपिंग गलत हो। ड्रॉबैक में प्लॉटिंग अलॉट कर लें। यस। श्रीकांत, स्क्रीनिंग टाइम कितना है? 'जिंदगी इस सफर सुहाना क्या जाना'. 9 minutes 58 seconds. Not bad. You have to reduce it by 2 more minutes, huh? Good morning, Nilesh. Joined late. What's role of volume in three-wing? I mean, what if the three-wing formed with decreasing volume versus increasing volume? Do you look at that differently? Yes. Plan of action change हो जाएगा. कल्चर अलोकेशन पॉइंट जब डेवलप होता है ना, तब मूवमेंट अलोकेशन भी रिवैम्प स्ट्रक्चर में आ जाती है. जब रिवैम्प स्ट्रक्चर में आता है, देन वी लुक फॉर एन एक्शन विच इज indefinite.
ठीक है। सर थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाना प्लीज। डेफिनेटली। So if the market is in iceberg zone and if you are getting a three wing setup in the opposite direction, right? So at that point of time, never look for that kind of opposite directional trades. Opposite directional trades with three wing setup तभी देखना जब high volume developed है, okay? Reason why? Because अगर iceberg zone में है and आपको three wing setup opposite direction में दिख रहा है तो वो trap कर रहा है, buying pressure गलत दिखा रहा है वो, या selling pressure गलत दिखा रहा होता है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आया है, देन एक्शन प्लान कैसे डिराइव होगा, करेक्ट? तो उस बेसिस पे अलोकेशन देखा जाता है। ओके नीलेश। फॉर एग्जांपल yesterday 11:30 to 10:30 to 11 UTC it created three wing with decreasing volume but overall price was in iceberg zone, so what that indicates? Yesterday UTC वॉल्यूम मोनेडा के हिसाब से देखना। 10:30 to 11, right? This was LG completion, no? Right? So LG completion allocation point है वो। So यहाँ पे three wing setup create हुआ है, but if you notice there is no three wing setup in the formation of any other point. Derive action plan is always looked in pursuance of opposite directions, no? मतलब ये थ्री विंग सेटअप और ये थ्री विंग सेटअप में देखो, ये डायरेक्टली एट द रैशनल पॉइंट में थ्री विंग क्रिएट है, राइट?
ये पोस्ट कंप्लीशन ऑफ टारगेट में 3 विंग सेटअप फॉर्म हुआ, सो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है। So the 3 wing setup has to be at the significance levels like LG or intact, then only we consider it as valid. Yes. Followed with one simple plan of action, that is volume consideration. ठीक है? Where did you exit yesterday's short? Exactly at this point. न्यूयॉर्क सेशन की पूछ रहे हो तो वहां पे re-entered again with the intact level over here. That trade completed at this point. That's when the new levels got shared again. No? एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आना चाहिए यहाँ पे। तब जाके मजा आएगा। एशियन सेशन का ये वाला जो ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुआ ना। वी डिड टोटल 3 एड ऑन्स। एड ऑन 1 यहाँ पे एग्जीक्यूशन 1 था, दिस इज एग्जीक्यूशन 2, दिस इज एग्जीक्यूशन 3 यहाँ पे इस टू बी 1 के साथ। ब्यूटीफुल गाइस, ये पूरा कवर अप में आना चाहिए। आधा आधा छोड़ेगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पूरा आना चाहिए कवर अप में। अगस्त्य, अरुंधति मैम, हेमंत, वरुण, स्मिता मैम, श्रावणी, हेमलता, पूनम, रितिका, फाइजा, एमटीएसएल स्टार्ट कर लो। 100 पिप्स रनिंग गाइस।
नहीं नहीं अगस्त्य, पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी चेंज्ड इन एक्शन टू रिवर्सल ना, तो एलजी तक होल्ड करेंगे। एमटीएसएल के साथ हाँ, सिस्टम ट्रेलिंग सीटीसी प्लस प्रॉफिट्स। या डिरेवेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देख के चलेंगे तो हो गया काम। सो लेट्स वेट। थोड़ा बहुत तो इज्जत करता है हमारे लेवल्स का मार्केट। सबस्टैंडर्ड अलोकेशन अलॉट करें क्या? और एक एड ऑन के साथ करते हैं ना। अच्छा खासा 150 पिप्स है, 100 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, तो और एक देखते हैं। स्मिता मैम आपका भी अलोकेशन देख सकते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग अंबिका। इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अलोकेशन पे डबल स्टैंडर्ड्स। थोड़ा बहुत क्या होता है सर, हमेशा आपके लेवल से ही तो मार्केट मूव होती है, वो अलग बात है। लवली। 4199 पे जाएगा ना, कंटिन्यूटी पे। 99 बोल रहा हूँ, 412 सॉरी 4201.972 तक जाएगा ना, देन जो अभी किए हम लोग सबकॉन्शियस अलोकेशंस पे, वो अलोकेशन को भी डिराइव्ड एमटीएसएल पॉइंट पे लेके चलेंगे। ठीक है। You see that the last LG there on my MT4, I have a very small wick. Does that change or move the LG idea for that candle? Peter, as per UTC, which candle has that small wick? If you can let me know. So basically, MT5 allocations and the other allocations is similar. MT4 is a bit older data. So hence a bit of conclusive movements get into a play. So you have to be very careful in that kind of movement plans. The very last one there now. Are you talking about this red candle one? Yeah, that's 1 hour, right? So can you check in preference of
allotting in 1 hour, does that the same candle in MT4 has a wick? Yeah. So if there is no wick, then definitely the transition movement will be till that point. Indirectly you gave trade today. अगर मैं डायरेक्टली भी दूंगा तो वो लोग लेंगे नहीं, तो चिल. नहीं नहीं, अरे यार सॉरी, ये वाला ट्रेड हमारा क्लोज हुआ तो 402 पे, यहाँ पे क्लोज हुई. ओके. बिकॉज मेन फ्रेम एंड एड ऑन क्वांटिटी का एसएल हमने रखा था 4202 पे, तो वहां पे जाके वो क्लोज हुआ ट्रेड. माय बैड. गुड मॉर्निंग सर.
No, that is completed, no? Yesterday there were two LG points, right? In that we were focused on only one LG point, which is on the top as per 1 hour allocation. So as per 1 hour allocation, which the LG was created, that got refabbed and the movement started, no? Samarth. Also, sir, the price will come 1475? No, due to 1 hour minimality. 1 hour minimality क्या follow करा? Stabilized movement के साथ आओ ना. So 1 hour allocation point will start from this range, right? तो stabilized movement action plan पे कहाँ पे होगा allotment? The deep down tissue will be from this point to this. This allocation will take from surplus supply allocation point. 100% break and continue. On the 100% break and continue, 150 rejection it's already taken. So you say 100 pips is nothing in the market. Then why does people be so happy with 100 pips? We should ask them, not me. Which LG point to be considered as high probable if there is 2 to 3 back-to-back LGs? The one which is matching with your 1 hour. अगर market नीचे के लिए आना है, then समझ let it cover today's diluted liquidity points. So once it reaches the diluted liquidity points, then we'll look for the next plan of execution. Not prior to that. Streaming will be there for next 15 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do shoot. So what psychological game does it play if you're playing with bigger lot size? Nothing. There will be no change in psychology.
because you're not following the rule of money, you're following the rules of pips. Yes, definitely. If you're looking in perspective of money, if you're trading from a higher lot size with the proper analysis, the running value will be totally different than a smaller lot size. Henceforth, a bit of psychology gap could take a play. But if you're just working on pip wise and analytical wise, then let it be 0.01 trade or let it be $800 trade, let it be $1,000 trade, let it be a $10,000 trade, everything will be the same. Okay. Variable action plan should be always the priority. If that is taken under the consideration, you guys don't have to look for anything else. And all the new members, focus on the analysis and the direction allocation in the markets. Don't look for money in the game, right? Follow the pips. If the target is of 200 pips, exit at 200 pips, right? You have entered with a setup S2V1 3 wing, doesn't matter, right? So till the time you guys are not focusing on the money, you're focusing on the analysis, the growth in the account will automatically be seen, right? Sorry if this one sounds silly, but yesterday 15 minutes candle at 6:30 has a very small wick. 6:30. Okay. So does it qualify for LG? Difference of just 0.285, or we strictly look for no wick candles? No wick candles. छोटा भी wick दिख रहा है, it's not considered as LG at any point, at any given point. बिना EMA डाले ट्रेड कैसे करते हो? माउस से एनालिसिस ड्रॉ करता हूँ, कीबोर्ड से टाइप करता हूँ नाम, सेटअप बनने पे एग्जीक्यूट. बिना EMA का ट्रेड नहीं होता है. कैंडल्स इतना छोटा छोटा क्यों? आप कितना पॉइंट्स कैप्चर करते हो? SCTRV
जो भी नाम है आपके। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 30 to 40 पिप्स आप कर सकते हो। 30 to 40 पिप्स। नहीं यार, 30 to 40 पिप्स बहुत बड़ा नंबर है। इंडिसीजन कैंडल पे हाई वॉल्यूम बनती है तो व्हाट डज इट मीन? इंडिसीजन कैंडल पे हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ है तो वो न्यूज कैंडल होगा आर्या। आप कितने पिप्स कैप्चर करते हो? आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से तो बहुत कम। मतलब आप 30 40 पिप्स भी कैप्चर नहीं कर पाते हो? क्या करे जनाब। 30 40 पिप्स मेरा तो तुक्के में लगा। ए मैसेज क्यों किया भाई? मैं उसको चिढ़ा रहा था, तू उसके बीच में आके ऐसे ही 40 पिप्स का है करके बोलता। न्यूज कैंडल पे कैप्चर हो जाता है ऐसे। मैं न्यूज कैंडल ट्रेड करता ही नहीं। अगर न्यूज कैंडल में एग्जीक्यूशन देखना है ना, सेटअप के साथ ही देखो। ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में मार्केट रहता है उसी डायरेक्शन पे मूवमेंट डेवलपमेंट में रहती है, उसके ऑपोजिट में नहीं जाती। On a very rare scenario that market hunts you up. सर यस्टरडे 4241 से मार्केट गिरा, तब आपका कोई सेल का सेटअप बना था क्या? 4241 इंटैक्ट लेवल का ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन था। जो ग्रीन कैंडल विक क्रिएट किया था ना, सरप्लस 150% के पास, उसी ट्रेड ऑफ एक्शन पे हुआ था। Execution was at 4238, holding was till 4208, 300 pips.
ओके, गुड मॉर्निंग। न्यूज स्कैंडल पे 30 पिप्स कैप्चर हो जाता है। हाँ तो क्या मैं दैट वाज फन। बेचारे को आप लोग भगा दिए इधर से। वो उसको हाइप कर रहा था यार। एंड आप लोग उसी को ही भगा दिए। Yesterday it covered pending LG at 4238, and after that it even covered 150% demand at 1445 and rejected. So the move between 3 to 5, sorry, 3 to 330 supply move was matched as last. Yes, that's right. So जो LG cover हुआ था ना 4238 का, Nilesh, that LG was discussed day before yesterday only, no? Market will come down, hunt the below LG point of 4 hours, and उसके बाद ऊपर जाके वो hunt होगा. So that was the hunt which got covered yesterday, post hunting. So once that hunt got covered, market continued the movement towards the short. 4220 लेवल का कैंडल को एलजी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं क्या? 4220, 4220 का कैंडल एलजी नहीं है। 4211 जो है वो एलजी। अगर एलजी होता तो मैपिंग होता ना। फिर so all the new members, whichever strategy, whichever concept, whichever allocations you guys are following, 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, come with a smaller capital, compound it, make it big by following the proper risk to reward, by removing fear, FOMO, and greed from the mindset. How you can do it by meditating, reading book, and yoga. With that, it's your hard-earned money, so don't give it to anyone to trade nor follow tips. Learn and then earn. Execution should be taken with your analysis, your psychology, your setup, your targets. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में. तब तक के लिए take care. Bye bye.